Hi everyone, welcome to my channel Stock Market India Reporter. Don't forget to hit the subscribe button and click the bell icon to stay updated with the latest videos. इस वीडियो में बात करेंगे एक स्टॉक के बारे में जिसका नाम है थर्मैक्स ग्लोबल। देखेंगे स्टॉक इस कंपनी करता क्या है, उसका फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस, रिटर्न कैलकुलेटर चेक करेंगे कितना रिटर्न दिया अभी तक, और कुछ न्यूज़ देखेंगे, ब्रोकरेज व्यू देखेंगे और टेक्निकल एनालिसिस ट्रेडिंग व्यू में देखेंगे इसका पोटेंशियल क्या है, करंटली कहाँ पे ट्रेड कर रहा है और क्या टारगेट हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं। थर्मैक्स का जो टैगलाइन है सस्टेनेबल सोल्यूशन इन एनर्जी एंड एनवायरनमेंट इज वन स्टॉप यूटिलिटी पार्टनर टू बोथ इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल सेगमेंट हेल्पिंग कस्टमर अचीव बेटर रिसोर्स प्रोडक्टिविटी एंड बॉटम लाइन व्हाइल मेंटेनिंग ए बेटर एनवायरनमेंट। सो जैसे देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारा सेगमेंट के बारे में बात हुआ है। बॉयलर एंड हीटर, प्रोसेस हीटिंग, प्रोजेक्ट एंड एनर्जी सोल्यूशन, सोलर पावर, एयर पोल्यूशन कंट्रोल, वाटर एंड वेस्ट मैनेजमेंट। ये देखा जाए तो ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इको फ्रेंडली पावर, वाटर रिसाइकलिंग, वेस्ट हीट एनर्जी, कूलिंग फ्रॉम वेस्ट हीट, एमिशन कंट्रोल, सोलर। तो इको फ्रेंडली जो जो इनिशिएटिव है उसमें भी थर्मैक्स काम करता है। देखते हैं पीयर कंपैरिजन screener.com से। सो थर्मैक्स का मार्केट कैप सबसे ज़्यादा है इस पर्टिकुलर कैपिटल गुड्स नॉन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट ये जो सेक्टर है इसमें 51,909 करोड़ ऑफ मार्केट कैप। उसके साथ जो जो है टीटागढ़ रेल, एक्शन कंस्ट्रक्शन, द एसी कंपनी, एलिसन इंजीनियरिंग गुड कंपनी, प्राज इंडस्ट्रीज एंड जुपिटर वोगन। सो पी देखेंगे तो थर्मैक्स का पी इंडस्ट्री पी से ऑलमोस्ट डबल के बराबर है, लेकिन बाकी जो पीयर्स का कंपैरिजन करेंगे तो इसमें एलिसन का सबसे लोएस्ट है 36। सो पी इज लिटिल मोर फॉर थर्मैक्स। क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे, रेवेन्यू लास्ट ईयर से थोड़ा ऊपर गया है, 1933 बिकम टू 184। नेट प्रॉफिट का बात करेंगे तो 60 करोड़ बिकम 109, वेरी गुड, बट क्वार्टर बाय क्वार्टर इट्स अ डिक्लाइन इन रेवेन्यू एज वेल एज इन द प्रॉफिटेबिलिटी। सो दैट्स द क्वार्टरली रिजल्ट। लेट्स सी ईयरली। 5 years पहले का बात करें तो 5731 was the revenue, now it is getting 9575. लास्ट ईयर का बात करें there is an increase in revenue also. Operating profit भी marginally high है for the last year, and the profit 643 was previous year, now it is getting into 693. So there is an improvement. We'll see in the latest quarter profit news. स्टॉक के बारे में बात करें तो मार्च 23 से 24 में काफ़ी रिडक्शन देखने को मिला है कैश फ्लो का, which was very good in 2021. Now it's getting to 247, so there is a decrease, and as you see net cash flow 220 था 21 पे, जो माइनस हुआ 2022 में, 23 में 144, now it become 19. So cash flow from operating activity is not so great for the company. Promoter is holding around 62%, that's good. FII is increasing their stake from last quarter to this quarter, 12.24 become 15.15. DYI ने decrease किया है अपना stake. Public almost remain same and others also same. So reduction in the DII but increase in the FII. Return calculator देखते हैं थर्मैक्स का। 10,000 rupees invested 1 year before become 17,000, so around 70% up in last 1 year for the stock. 3 साल में बात करेंगे तो 220%, which is very good return. 10,000 become 32,000. 5 years, much better, 300%. 10,000 become around 40,000. So that's the return Thermax made for their investor. Now let's check the recent result on 2nd of August. The result came. Profit raised by 96.69%. That's what we see in screener.com. So revenue also increased 13.01% year on year, and profit by almost 100%. So we are talking about this figure, June 2023 and June 2024. So revenue 1933 become 2184, and the profit 60 become 109. That is what the news is all about. So brokerage is saying hold Thermax, that is after the result on August 6, very recent. Target is set for 4774. So 4774 is the target they are setting. We'll see the chart. So that is ICICI Securities is giving the target for Thermax. Whereas Prabhudar Leeladhar is saying reduce the Thermax, target price is 4237. So there is a reduction in the estimate and the target price. Another news for Thermax on August 4 that Thermax is eyes new partnership for green hydrogen initiative. So as we see कि ये लोग green energy पे काफ़ी effective initiative लेते हैं. So Thermax is eyeing much more partnership. So what is this news? Let's see. So Thermax is already set up a strategic unit focused on hydrogen EPC project and localization of electrolyzer manufacturing. New partnership expected within 90 days. So that is the news all about. Alongside its green hydrogen ambition, Thermax recently inaugurated a manufacturing plant in Pune dedicated for water and water waste solution.
So this significant stake was further strengthened by the acquisition of 51% stake in TSA Process Equipment, enabling the Thermax to offer comprehensive range of solution for highly purified water, ultra pure water and water for injectable across rapidly growing industries. So ये सेक्टर में Thermax अपना जो स्टेक है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग करने का कोशिश कर रहा है. Because of that, the acquisition happened and new partnership also getting into picture. So Thermax also expanded its footprint in the chemical sector by establishing a wholly owned subsidiary, Thermax Chemical Solution. So there are very great things happening for this company. In near future, we'll see on this segment how this company is growing. This is a weekly chart for Thermax, and as we see, 2021 नवंबर पे ये जो लॉन्ग टर्म जो रेजिस्टेंस था उसको ब्रेक करके एक बार सपोर्ट लिया उसी जगह पे और अपवर्ड मोमेंटम चालू हुआ. एंड फ्रॉम देयर इट्स टेकन a parallel channel. So I have drawn that for you. We'll see where it is heading. And now it is trading in 4356. So there is a possibility that it may touch the bottom line. So let's discuss the day chart. So these are the possibilities what I have anticipated in my analysis. अभी यहाँ पे स्टॉक है अपना 4356 में. So जैसे आया है I have draw the line. It hit the resistance, came back, took a support in 4940, again gone up little bit 5200, and then a fall down to 4356, the current level. So there is a possibility it may take support here and try to move forward, upward in this W pattern. And in that way, the maximum possibility, maybe it will take time, 7000 plus might be the target. Or there is another possibility, the way it came down, it may get another resistance around 4803 and come back and hit the wall of 3900. So two possibilities are there, but if it start moving up from this current support level, there is a huge potential for the stock to hit 4950 in coming days. And this 200 EMA also available here, so that level around 4175. So that is another possibility, it may come till this 4175 and then start moving up. So that's as per my analysis. These are the route map for Thermax in coming days. Take your own analysis and take a call on the new investment if you want to make. And if you are holding, then there is a possibility to accumulate more. Good fundamental stock, new business are coming up, new segments are opening up, so it should perform well in near future. That's all for today's market update. Remember to stay informed and make well-researched decision on your investment. If you found this video helpful, please like, share and subscribe to our channel for more updates. Thank you for watching and we will see you again in next video.